हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शालिनी और आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 126 says कि a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Now, a contract of guarantee may be either oral or written, and it is a tripartite agreement. Now, what does a tripartite agreement means? It means that there are three persons involved in a contract of guarantee. The first being the surety, the second the principal debtor, and the third person is called the creditor. Now, surety कौन होता है? Surety is the person who gives the guarantee. Principal debtor वो होता है जिसके respect में guarantee is given by the surety. And creditor is the person to whom the guarantee is given. तो जिसको guarantee दे रहे हैं he is the creditor, and जिसके respect में guarantee दे रहे हैं is the principal debtor. Now, contract of guarantee में 3 parties होती हैं and 3 contract होते हैं. The first contract is between creditor and principal debtor, the principal contract. The second contract between the creditor and surety, and the third contract between surety and principal debtor. और surety और principal debtor के बीच में जो contract होता है उसे हम implied contract बोलते हैं. Alright, so contract of guarantee में हम promise करते हैं to perform या discharge the liability of a third person. इसमें 3 parties होती हैं and 3 contracts होते हैं, and surety and principal debtor के बीच में जो contract होता है वो implied contract होता है. Moving on. Now, section 127 talks about consideration for guarantee. It says anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. Now, let's understand this with an example. Example बोलता है A sells and delivers goods to B. C afterwards requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so, C will pay for them in default of payment by B. Now, इस example में A is the creditor, B is the principal debtor, and C is the surety or guarantor. And C is telling A, that is the creditor, कि अगर वो principal debtor को 1 साल के लिए sue ना करे, then he will guarantee the payment of debt in case principal debtor defaults in payment. Now, the creditor agrees to forbear to sue as requested. Now, this promise by the creditor to not sue the principal debtor is a sufficient consideration for surety. Alright, now let's take another example. A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. Now, this agreement is void क्योंकि section 127 के according consideration for guarantee is a must. It's not necessary कि वो consideration monetary term में हो. It's enough कि अगर वो consideration कोई act या कोई promise हो from the side of the creditor for the benefit of the principal debtor, वो sufficient consideration कहलाएगा. It's not necessary कि monetary term में consideration हो, but consideration होना ज़रूरी है. अगर consideration ही नहीं हुआ then वो agreement void होगा. ठीक है. इसके बाद section 128 talks about surety's liability. The section says the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. Now, अब co-extensive का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो surety की liability है वो exactly same होगी with that of the principal debtor. और अगर principal debtor की liability जितनी बढ़ेगी, जितने extent तक बढ़ेगी, surety की liability भी उस extent तक बढ़ जाएगी. अगर principal debtor की liability घट रही है तो surety की liability भी घट जाएगी. Okay? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. A guarantees to B the payment of a bill of exchange by C, the acceptor. The bill is dishonored by C. A is liable not only for the amount of the bill but also for any interest and charges which may have become due on it. Now, A यहाँ पे guarantor है and C क्योंकि not only payment के लिए liable होता, that C is the principal debtor, वो payment के लिए liable होता plus interest के लिए भी, and क्योंकि guarantor की liability co-extensive होती है, guarantor भी not only he will be liable for payment but also for the interest. ठीक है. Now, section 128 says unless it is otherwise provided by the contract.
तो अनलेस एंड अनटिल गारंटर ने अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर लिया है बाय कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी लाइबल एज एग्जैक्टली एज द प्रिंसिपल डेटर. ठीक है. इसके बाद सेक्शन 129 टॉक्स अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी. It says a guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee. Now let's look at the illustration. A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment by C of those rent. Now this is an example of continuing guarantee. क्योंकि यहाँ पे collection of rent is a series of transaction, इसलिए ये कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जाम्पल है. इसके बाद लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. सो इंडेमनिटी में देर आर टू पार्टीज, नेमली द इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड, बट गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. नाउ in indemnity the liability of indemnifier is primary and unconditional. Now indemnifier की liability primary होती है in the sense जैसे ही वो लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है ऑन द पार्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, द इंडेमनिफायर बिकम्स लायबल. द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे इज़ दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, एंड अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाया तो श्योरिटी विल बी लायबल एंड देयरफॉर इट इज कंडीशनल एज अपोज टू इंडेमनिटी विच इज़ अनकंडीशनल लाइबिलिटी. Then the liability of indemnifier arises only on happening of a contingency. जबकि guarantee में liability arises on non-performance of an existing promise या फिर on not paying the existing debt. And the purpose of indemnity is reimbursement of loss, whereas the purpose of guarantee is security of the creditor. With this we have come to an end of the video. Thank you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then like, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू लॉ स्टॉर्मिंग चैनल. और अगर अभी तक आपने इंडेमनिटी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा. डू वॉच इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.